Today we are going to look at Panda series. According to the syllabus, what all do we have to learn when we come with this chapter of pandas? Pandas, and in pandas we have two data types. One is called a series. So in series, the first thing is you have to learn how to create a series. So these are the different ways you can create the series. The first thing is to create an empty series. Next, you should know if a constant value, suppose the constant value is 100 and there are 10 elements in your series, then each value is 100, 100, 100, 100. That is called as using the constant value. Then using range function can be given. This is the Python function. So you can give the range. Suppose you want to say you want all the values in between 100 to 200 and the step value is 10. So you are creating a series which is starting from 100 going up to 200 with the step value 10. So all the values 100, 110, 120, this way you will find a series is created. You can create series using the list, using tuples, using dictionary, and using NumPy functions. So some of the NumPy functions are array, arrange, line space. There are other methods as well. So you in the syllabus you have NumPy functions. You should know how to create the series using NumPy functions. Next, talking about the attributes. If you say ending, you want to know the number of dimension. Of course, series is going to give the answer 1 because the dimension is 1. You ask for index. If the user has given the index value, it will be displayed. If user has not given the indexes, then by default, internal indexing which starts from 0, 1, 2, 3, that will be displayed. You can ask for the data type, D type. You will get the answer as integer, float, or Unicode. Maybe something like integer 64, float 64. So this is because your Windows is 64-bit bit operating system. Then you can ask for series name. You can ask for the series values. You can ask for the shape. Shape, it is one dimensional, so it is going to give you only the number of elements. The size is going to be the same. The empty, if it is completely empty, it will say true. If it is not empty, it has some values. If it say false, has nans. If your series is having some nan value, कभी कभी हमारे पास वैल्यूज नहीं होती हैं तो हम उनको खाली वैल्यूज रखते हैं. So has nans will say yes, it has some nan value, not a number value. After attributes, you should know about the indexing. Now there are two types of indexing that is called as positional indexing, which is internally provided by the system, which starts from 0, 1, 2, 3. Suppose there are 10 values, 10 elements, 10 items in the series. Then the positional indexing will always be there by default as 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. But in case while creating the series, you have given some indexing, then it is called as label indexing. So if you want to know which value is at index 1, you can write down the name of the series and you can write down within the square bracket, मुझे 1 का value देखना है. But sometimes it happens that we want to see the multiple values. We want to work with multiple values of the series. So we can go with the slicing option. Slicing gives you the multiple values from the series. You can give the start index, you can give the end index, and you can give the step value. When you give the start index, colon and index. In the case of positional indexing, the end index is not included. अगर आपने कहा है मुझे 1 से लेके 5 तक के सारी values दे दीजिए, index number 1
से लेके इंडेक्स नंबर 5 तक की वैल्यूज आप मांग रहे हो, बट 5 एंड इंडेक्स इज नॉट इंक्लूडेड, इट इज एक्सक्लूडेड, वो 4 तक जाएगा और उसकी वैल्यू देगा. If you have given the step value, then accordingly it is going to give select those particular indexes and the particular values will be given. In the case of label indexing, the start index, colon and index, colon step value can be given. If the step value is not given, it by default it is 1 only. And end index तक जाता है. So that is the major difference between positional indexing and label indexing. Positional indexing is internal indexing which starts from 0, 1, 2, 3, 4. Label indexing is provided by the user. When you are looking for some range of values, start index up to end index जब आप करते हैं, and index is not included in case of position indexing, whereas in the case of label indexing and index is included. अगर आपने कहा कि मुझे values index number 1 से 5 तक चाहिए label indexing के केस में, तो वो 5 तक जाएगा, whereas positional indexing में जो अगर आपने कहा 1 से लेके 5 तक चाहिए तो वो 5 तक नहीं जाएगा, वो 4 तक जाएगा. These are the differences between the positional indexing and label indexing. Now with series you can go with certain maths operations, scalar operation and vector operation. Scalar operation क्या होता है? एक series उठा लीजिए, उसमें आपने suppose you want to add 100 to each element of it. So plus 100 लिख देंगे, 100 सारी values में add हो जाए. अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, -100 करना चाह रहे हैं, तो सारी वैल्यूज -100 होके आपको आंसर एक न्यू सीरीज मिल जाएगी. सिमिलरली मल्टीप्लाई और डिवाइड पे कोई भी एक स्पेसिफाइड वैल्यू दे दीजिए, वही चीज, वही वैल्यू, वही ऑपरेशन सारी वैल्यूज के साथ चलेगा पूरी सीरीज में. पूरी सीरीज पहले एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक. बट वेक्टर ऑपरेशन इज अप्लाइड ऑन मल्टीपल सीरीज. सपोज यू हैव टू सीरीज. So with two series you can have the add operation. आप दो सीरीज को ऐड कर सकते हैं. इंडेक्सिंग देखा जाता है सेम इंडेक्स वैल्यूज को लेकर, इट इज गोइंग टू ऐड द वैल्यूज. अगर इंडेक्स एक में अवेलेबल है और दूसरे में वो इंडेक्स नहीं अवेलेबल, सपोज एक सीरीज बड़ी है और एक सीरीज छोटी है और इंडेक्सिंग में भी मिसमैच हो रहा है, तो जहां जहां इंडेक्स मैच होगा वहां वहां ऑपरेशन होगा. बाकियों के लिए आंसर नैन आ जाएगा, नल आ जाएगा, नॉट अ नंबर आएगा, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएगा ऑपरेशन. सो यू कैन टेक टू सीरीज, you can add, subtract, multiply, divide with both the series, between the two series, or you can have the option for reverse add, reverse subtraction, reverse division, reverse multiplication. Now there is one parameter written here, fill value. Sometimes it happens is, suppose you have series, first series जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन दूसरी सीरीज है जिसमें दो एलिमेंट्स मिसिंग हैं. तो आप फिल वैल्यू से वो जो मिसिंग है उनको कुछ वैल्यूज दे सकते हो. वो वैल्यू डालने के बाद तो वो ऑपरेशन कर पाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी आप बता रहे हैं. अदरवाइज जहाँ पे नैन होता है, नल होता है, जहाँ वैल्यूज नहीं होती है, वो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा. सो आंसर वहां पे नैन या नल आएगा. Similarly, you can go with the conditional operations. Conditional operations are called as Boolean operations as well because the answer is either true or false. So Boolean हो गया. Conditional operations always gives Boolean answer. True या false. Boolean का मतलब दो होता है, two, true or false. So you can ask for equality. Suppose you have a series and you want to know कि इस series में क्या value equal to 2 है या नहीं. So series S1 has S1 double equal to 2. So it is going to check each element of the series. क्या ये equal to 2 है? True or false? It is going to check each element of the series and it is going to give you the answer as true, false, true, false. You can ask for equality, not equality, greater than, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू. ये कंडीशनल ऑपरेटर्स यूज होते हैं और आंसर ट्रू फॉल्स में आता है. सो द डेटा कैन बी फिल्टर्ड बेस्ड ऑन द कंडीशन.
With series there are ways to handle the missing value. आपको पता है आपके सीरीज में मिसिंग वैल्यूज हैं, तो आप इस एनए फंक्शन यूज करके या नॉट एनए फंक्शन यूज करके या नॉट नल यूज करके आपको पता चल जाएगा whether your series has NaN values, null values or not. There is an option of fill NA. There is a function fill NA जो कि help करता है। आप कोई वैल्यू फिल करने के लिए बोल दीजिए फिल NA राउंड ब्रैकेट में 100, तो जहां जहां NA मतलब नॉट अ नंबर है मतलब नल है, वो मिसिंग वैल्यूज 100 से रिप्लेस हो जाए। Drop NA, sometimes we don't want to work with NaN values because we don't know what exactly could be there. तो हम उनको ड्रॉप करने के लिए ये ऑप्शन को पसंद करते हैं कि इस सीरीज में अगर कोई वैल्यू नहीं है तो उसे हटा दिया जाए। सो यूजिंग ड्रॉप करने यू कैन रिमूव। There are certain functions which can be applied on series. So you can create the series, you can find if it is having some null values or not some null values. You can use the function head or tail to get the top 5 values or bottom 5 values. You can ask for all the attributes. आपको इंडेक्स भी देखना है, आपको डेटा टाइप भी देखना है, आपको डायमेंशन शेप साइज भी देखना है, तो इनको लिखिए, आपको सारे एट्रीब्यूट्स जो ऊपर हमने लिखे थे उन सब का आंसर वन रो में मिल जाए। एज टाइप यू कैन चेंज द डेटा टाइप। अगर कोई इंटीजर सीरीज है आपको फ्लोट बनना या फ्लोट सीरीज है आपने उसको इंटीजर बनाना है, तो एज टाइप ऐसा डेटा टाइप होना चाहिए, तो इसके ब्रैकेट के अंदर आप स्पेसिफाई कर दीजिए, वो वाला टाइप बदल जाएगा, उसका डेटा टाइप बदल जाएगा। यूनिक, कोई भी सीरीज में मल्टीपल वैल्यूज हैं, आपने कहा यूनिक का मतलब वो आपके लिए सिर्फ यूनिक वैल्यूज को लेकर आएगा, डुप्लीकेट वैल्यूज को नहीं लिखेगा। काउंट एंड लेंथ, ये दो फंक्शंस हैं। लेंथ इज गोइंग टू काउंट एग्जैक्टली हाउ मेनी वैल्यूज आर, हो सकता है एक सीरीज में 10 वैल्यूज हैं, तो len is going to give you the answer as 10, लेकिन उन 10 वैल्यूज में से दो वैल्यूज तो है ही नहीं, लिखी ही नहीं है, जगह तो है लेकिन लिखी तो है ही नहीं, तो काउंट क्या आंसर देगा 8। So count is counting the not null values. Len is exactly counting how much space is taken by that particular series. Value count is going to give count the values and tells you fill NA is जैसे कि यहाँ पे बताया था, वो फिल कर देता है वैल्यूज को, या आप एनी वैल्यूज को ड्रॉप करना चाहें तो ड्रॉप। दिस इज ऑल देयर इन द सिलेबस एंड that is all about series.